Kanika, can you introduce yourself to the board? Yes, sir. So my name is Kanika Garg. I am born and brought up in Chandigarh only. Thereafter, I completed my graduation in chemical engineering from Punjab University, Chandigarh. And thereafter, I pursued my LLB, which I completed in the year 2023 from the Punjab University, Chandigarh itself. Apart from that, sir, I have a keen interest in performing Kathak. Right. आपने केमिकल क्या बताया आपने किसमें किया है? Chemical engineering, sir. केमिकल, वेरी गुड. तो डायरेक्ट उससे आप लॉ की तरफ आपका झुकाव हुआ, ऐसा क्यों? So during my graduation days, I realized that engineering maybe is not my cup of tea, especially when I used to have my evening discussions with law friends. So they were, sir, enriched with various lawful judgments and the impact which they have on the society. So I took my own time and to analyze the basic nuances of the law, and I decided, yes, I have a better career in law in the legal field. And engineering will ultimately comprehend and complement this. It was not going to degrade this. राइट. ये फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताएं आपका? The Indian Evidence Act and Indian Contract Act. इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत अगर हम बात करें अनड्यू इन्फ्लुएंस की, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? So as per Section 16 of the Indian Contract Act, undue influence persists when the relations between the parties are such that they either have a fiduciary relationship or they even have subsisting nature, so that one person can dominate the will of the another. Any section? Section 16, sir. 16. आपने प्लेज वर्ड सुना है? प्लेज? Yes, sir. What is pledge? Okay. So pledge होता है कि जब whenever a property is pledged for a certain period of time as a security for the movable property, to be precise. Okay. What is difference between mortgage and pledge? Then mortgage, it is immovable property, but in pledge it is a movable property. Mortgage is considered under Transfer of Property Act, and pledge is considered under Indian Contract Act. Are you sure? Yes, sir. Pledge is not considered in Transfer Property Act? I have not read any specific provision regarding pledge and Transfer of Property Act. आपने प्लेज के बारे में टीपी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं देखा? Yes, sir. The lease can be said, but not specifically. Okay. रिकॉल करिएगा, रीड करिएगा उसको. Yes. हॉबीज बताइए आपकी. I'm keen in performing Kathak. कथक. राजस्थान आपके लिए कंफर्टेबल स्टेट रहेगा? Yes, sir. आप राजस्थान से ही हैं? नहीं सर, मैं चंडीगढ़ से हूँ, बट मेरी फैमिली रूट्स हरियाणा के एक गांव से है. मेरी नानी का घर आज भी वहीं पर है, तो हम जाते रहते हैं. तो प्लस राजस्थान से भी रूट्स हैं, जैसे सालासर खाटू श्याम जी मंदिर है, तो वहाँ हर मंथ हमारी फैमिली ट्राई करती है कि हम जाएं. प्लस आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली सर, तो कल्चर ट्रेडिशंस का रूट हमेशा से रहा है. कथक आप पसंद करते हैं, राइट? तो कोई 5 ऐसे लोक नृत्यों के नाम बताइए जो राजस्थान में फेमस है. सर घूमर, चाउ बेली, if I'm pronouncing it correctly, sir, sorry. पॉइंटिंग बताइए. भवई. Yes, sir. नंबरिंग करके बताइए. Yes, sir. So first is Bhavai dance, second is the Kathputli dance, the third is Ghumar, very famous, fourth is Kalbelia dance, and so fifth is Chow Belly. कोई ऐसा डांस बताइए जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, राजस्थान महिलाएं नहीं करती हैं. Sorry, sir, I'm unable to read. कच्ची घोरी का डांस होता है जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है. अच्छा, एक पॉइंट मेरा ये था कि आप यहाँ पे मंदिर दर्शन तो किए हैं, खाटू श्याम जी वगैरह, लेकिन बाबा रामदेव जी के बारे में आप क्या जानते हैं? लोक देवता. यस सर, तो उन्होंने योगा को काफी प्रमोट किया है. और आई एम आस्किंग अबाउट लोक देवता बाबा रामदेव. सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. ठीक है. जब हम फलोदी के रूट पे जाते हैं तो वहां पर लोक देवता है बाबा रामदेव जी, एक है तेजा जी, ठीक है, गोगा जी. ये हमारे राजस्थान में लोक देवता है जो बहुत फेमस है, जिनकी पूजा बहुत अच्छे से की जाती है, बहुत फेमस है मतलब. अच्छा, जोधपुर में
हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? Sir, on Pali Road, if I am not wrong. राइट राइट, यू आर राइट। पाली रोड पे कहाँ पर है एरिया का नाम? Don't remember the specific area. ज्यादा मन जो पाली रोड पर ही, कोई बात नहीं, वेरी गुड। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कभी गए हैं या नॉलेज है कहाँ पर है ये? Sorry, sir, कौन सा? एकलिंगनाथ जी का मंदिर, Ekliнгnath. Sir, in Rajasthan. या इन राजस्थान? Sorry, sir, I'm not aware in Rajasthan, but I know for sure it's in Madhya Pradesh as well. ओके ओके, इन मध्य प्रदेश है, आई डोंट नो अबाउट दैट। चलिए, इंफॉर्मेशन दी आपने, बट इट इज इन उदयपुर, राइट? Okay. माइनर को के संबंध में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या प्रावधान है? व्हाट आर द प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू माइनर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? The section 10 states that every agreement is on contract subject to that it should not be formed by a minor. That is, the person should have a sound mind and should have आराम से बताइए, आप बहुत फास्ट बता रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज Sorry. आराम से बताएं। Yes. The section 10 of the Indian Contract Act provides that every agreement is in contract subject to that the person should have a sound mind and should have completed the legal age to form a contract. And in India, sir, as per Indian is an act which states that a person above 18 years of age is above the age of majority. I want to ask you that, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ who is minor, I want to ask you the legal provision with respect to minor. For example, अगर किसी माइनर को कोई बेनिफिट दे दिया गया, Yes, कोई बेनिफिट मिल गया, अब उस माइनर ने गलत तरीके से वो बेनिफिट लिया अपनी एज को छुपाकर, okay, sir. उसने बताया कि भाई मैं 20 इयर्स 21 इयर्स का हूँ, लेकिन वो था 17 इयर्स का ही, उसने अपनी एज को छुपाया Okay. और उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस पैसा ले लिया। अब उसने, जब भाई कोर्ट में मामला गया तो वहां बोल दिया गया मैं तो माइनर हूँ, यू कैन नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम माय साइड। Okay. कोर्ट का भी प्रोविजन, माइनर से रिकवरी पॉसिबल नहीं होता है। तो अब ऐसा कौन सा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है भाई माइनर से अमाउंट रिकवर नहीं किया जा सकता, हाँ जी, sir. ऐसा कौन सा एक्ट है जहां पर मैं माइनर से पैसा रिकवर कर सकता हूँ? The मेरे specific- एडवांस पैसे तो दिए हुए हैं। Act, a specific relief act as per section 33 subsection 2 clause B, which states that the minor has to ensure equity, justice and good conscience, minor has to rebound the money. Very good, very good. It will be recovered from section 33. We can use that. Yes. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर आगे बढ़े तो वहां पर इंजंक्शन के प्रावधान भी दिए गए। कितने टाइप के इंजंक्शन दिए गए? The two types के, first temporary and second perpetual under section 37. कौन कौन से दो हैं, वापस बताएं। Temporary injunction and perpetual injunction. देन मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होगा? This is also mandate under section 39. ओके, prohibitory, mandatory. यस यस। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए कि एक मालबरी इंजंक्शन भी होता है। Sorry sir, I'm not aware about. चलिए कोई नहीं। यस, जस्टिस मित्तल सर आपसे बात करेंगे। यस सर। Thank you. You have shifted from science to law. No doubt, it is a good thing. So whether the writing of a judgment or judgment writing is a science or is an art? Sir, I believe it's a combination of both science and art. Like firstly, in science, it can be stated that it should be in a structural and in a particular format, but it's an art because we have to use a particular legal language as well. How you will start a judgment? What shall be the opening sentence of a trial under section 307 IPC? So the brief facts of the case have to be written first. Opening sentence. That the charge sheet has been filed under section 173(2) in accordance with under section 307 of it. 307 is an offense which is always tried after committal. Yes, sir. Charge sheet must have been filed in the court of judicial magistrate or the chief judicial magistrate. So the opening sentence shall be, the accused such and such has been committed to this court to face the trial for the offense punishable under section 307 IPC.
Okay, this shall be the opening sentence. Okay. Now, what are the requirements of a judgment? क्या होना चाहिए judgment में? Sir, it should have the party court name first of all, then the party's name, then under which section it has been tried, then the brief fact, prosecution evidence, then the defense evidence and the statement of the accused, and then the statements of the witnesses. What are the requirements of a judgment as per CRPC? Yes. As per Code of Criminal Procedure, Yes, sir. what are the requirements of a judgment? Sorry, sir. Section 354 CRPC. Please note down and read. Yes. Okay. What do you mean by forcible religious conversion? So when a person is forcibly tried to convert his religion from his original religion to another religion, by any means, by inducing, by coercion, or even by undue influence also. Your definition is something not correct. So although we under Yeah. Article There must be some intention or some purpose to convert someone. yes, sir. It cannot be without purpose or without Yes, sir. motive. Yes, sir. You know. It may be due to allurement, due to assurance of good education, good job, whatever it is. Yes, sir. Do you know something about Rajasthan Rent Control Act? Yes, sir. Who is a senior citizen? What is the definition of a senior citizen? So the person whose age is above 60 years. No, madam. 65 years. Right. Please read the local laws of Rajasthan, Yes, sir. more particularly the land laws, and go through the topography of Rajasthan, which are the states, which are neighboring state of Rajasthan, what is the culture of Rajasthan, what is the food habits of Rajasthan, Mehman Nawazi, Rajasthan की important monuments, राजस्थान के बारे में आपको थोड़ा सा Okay. जानना चाहिए, ठीक है? Specific to Jaipur and Jodhpur or the whole state? The whole state, and I would suggest you to please purchase this book, Incredible India. ठीक है, इसमें आपको Okay. न केवल राजस्थान का बल्कि सारे स्टेट्स का ही आपको जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो आपको सब मिल जाएंगे. राजस्थान का नक्शा भी मिल जाएगा, कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले कहाँ से टच करते हैं, क्या है, ठीक है? Now, what do you understand by ADR? The ADR means alternate dispute resolution. Sir, when there is a dispute, so we always try that there is a mediator or a conciliator who tries to solve the dispute in an amicable manner, so that the parties remain in a friendly mode after the dispute as well. So whether the decision of the mediator is final or the parties have to take the decision? So that sets the parties to take the decision. The decision of the mediator is not final. Not final. And suppose there are talks of compromise and the mediation fails. So whether the mediator is required to note down the reasons of failure or simply it will write mediation failed. No, sir, the mediator is required to record the reasons for its failure and send to the No. The reasons are not to be disclosed because it has to go before the court of law, and the mediator talks them privately and tries to come to a conclusion. There may be so many reasons, so the mediator has to write simply mediation failed. Okay. When our constitution was enacted,
26th November 1949. Under which authority? Authority. Every law has to be made by under some authority. Yes, sir. It was formed by the Constituent Assemblies. How that assembly was formulated? Under the Cabinet Mission Plan 1946. No. Plan is something else. Indian And- Independence Act 1947. Yes. It was as per the powers provided by the Indian Independence Act 1947, which permitted Dominion of India as well as Dominion of Pakistan to adopt and frame their own constitution. Yes. Okay. What is the short title of the Constitution of India? That's the Constitution of India. Is there some definition or general knowledge से आप बता रही हैं? No, sir, it has been written under Article 392 of the Constitution of India. नहीं, 393 भी हो सकता है. चलिए. By Constitution of India, which acts were repealed and why? I'm not sure about the exact name of the acts which were repealed, but there were certain acts which were formed by the British at that time. They were repealed. By the Constitution of India, the Government of India Act 1935 was repealed. The Independence of India Act 1947 was repealed. These were the two acts which were repealed. Okay, there is always a repealing and saving clause in every act. So I'm not asking about constitution. I'm saying just, for example, Sealing of Urban Land Act that has now been repealed. So whether any property which was under sealing prior to repeal of the act has been taken by the government, then whether after repeal of that act, that land can be taken back by the owner. I'm not sorry. What is the impact of repeal of any act? So the previous act is repealed, but the provisions, if the situation arises before the repealment, it will be governed under the original act only. Where it has been provided? Repealing. We are a student of law. Yes, sir. We cannot impute our general knowledge. Yes, sir. The General Clauses Act, Section 6C, provides impact of repeal. That anything done or purported to have been done under the existing law shall not be questioned afterwards, and that shall be taken to be settled. There is a impact of repeal. Now, what is Article 21 of the Constitution? So Article 21 of the Constitution provides that no person shall be deprived of his right or personal liberty except due to procedure established by law. What is difference between procedure established by law and the due process of law? The due process of law does take into account the executive actions as well, but in procedure established by law, only legislative actions are considered. Any famous case? The Menka Gandhi versus Union of India, 19. Very good. What were the facts? So she was not allowed to move abroad, to go to abroad, and her passport was seized. Thereafter, she filed it. Very good. Very good. That's all I think. She is a good candidate and to the point
certainly good candidate. Thank you. Thank you. Thank you. The reviews. Yes. We are giving. Any question from your side? Yes sir, कुछ Yes. सर जैसे कि कई बार कोई मतलब हिंदी में क्वेश्चन पूछता है या इंग्लिश में, तो मेरा आंसर की लैंग्वेज उससे डिटरमाइन होनी चाहिए या मतलब आई स्पीक इन इंग्लिश ओनली? नहीं, अगर हिंदी में पूछे तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, अंग्रेजी में पूछे तो आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए, एंड यू आर गुड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. कंफर्टेबल विद बोथ. यस, यू आर कंफर्टेबल. और सर दूसरा मेरी ना स्पीड कई बार बढ़ जाती है, सर ने तो बीच में टोक दिया बट शायद वहां पे ना टोके, मेरी बढ़ जाती है सर ऑटोमेटिकली, तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ सर मैं. चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करिए, हाँ जी. कोशिश करिए. ठीक है, ठीक. यस कनिका जी, यस सर. थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए हाँ जी. और ये फील मत कराइए कि आप लेस कॉन्फिडेंट है, बट आप कॉन्फिडेंट है. आपकी नॉलेज जितनी होनी चाहिए अप टू मार्क है. ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज में लेकुना है. तो आप कॉन्फिडेंट होके जाइएगा. और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आप जब आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आप अपने आईज को एकदम, आप किसी नोटिस मैंने किया है कि एक बार आईज आपने ऐसे कर लिया पूरी तरह से, Yes, sir. तो वो करने का प्रयत्न नहीं करें. ऐसे करने से थोड़ा सा ऑड लगता है. एकदम स्ट्रेट रहे. बाकी आप अच्छा कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और कर लें, एक दो और मॉक लगाइए. यू आर गुड कैंडिडेट फॉर आरजेएस. बेस्ट ऑफ लक. सर तो मैं जब कई बार क्वेश्चन सोच रही होती ना तो मेरी आईज चली जाती है, तो मैं तब कहाँ देखती हूँ? नहीं, आप है ना, मैं बताता हूँ. आप जब भी कभी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि हर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं भी क्या मैं कुछ समय ले सकती हूँ? आप पूछ सकते हैं कि कैन आई टेक अ टाइम. बस आप सिंपल तरीके से रहिए, फ्रंट में देखिए. बहुत ज्यादा स्माइली भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से. राइट. नॉर्मल. आज ठीक था सर, बिकॉज मेरा है थोड़ा सा अच्छा. ठीक था. अच्छा कर लोगे आप. मेंटेन करो उसको. ठीक है. ठीक है. थैंक यू सर. ओके, वेरी गुड. बेस्ट ऑफ लक.